নমস্কার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গায় শুভ সকাল যে যেখানে যেভাবে আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন After a couple of weeks gap as normal we are back again with talent a powerhouse of talent I call it Harjot Kaur she is young girl young desi girl having a proper classical music background, has moved on to lighter music. I was just talking with a couple of friends in a previous session with Sadhana where they were asking me about my project and other work. And I was telling them that when we started the music in UK, the first idea was to take Indian classical music to the youngsters. So we did several projects with Bollywood music as well as Indian classical music mixing together. And as I always say, no matter whatever you want to sing, go for it. But never forget that you need to strengthen your root. So classical music is the root, as we all know and we strongly believe. You will hear Harjot and you will see what I exactly mean. She has already performed in famous Bollywood films. She has worked with many eminent producers and music directors of India. And at a very young age, she has already captured the heart of millions of people worldwide. As I say, for Kalakar, we always bring you the best. So let us meet with Harjot Kaur, joining us all the way from India. Good evening, Harjot. गुड इवनिंग नमस्कार कैसे हैं नमस्कार बताइए बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हैं बस बस बेताब है आपको सुनने के लिए मैं भी बहुत खुश हूँ अभी यहाँ पर आके Thank you so much for joining. Let us welcome our regular panel members. कमलवीर सिंह जी जिनको आप सभी लोग जानते हैं बहुत मशहूर है वायलिन प्लेयर एंड अ गजल सिंगर एंड अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ कलाकार एंड whenever I perform if I don't have Kamalveer ji with me अधूरा अधूरा सा लगता है Thank you Kamalveer ji for joining Thank us. you. Thank you very much. Namaskar. Hello Harjot, how are you? हेलो अंकल आई एम गुड हाउ आर यू I'm fine, thank you. हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए है ना Let us welcome Dr. Imtiaz Ahmed, Kalakar's project director, an eminent Tagore singer of UK, and director of Anandodhara Arts UK. Imtiaz, good evening and namaskar. Namaskar. Hello, Harjot. How are you? आई एम गुड हाउ आर यू Good to see you here. Thank you. All right. So Same looking here. forward to your, beautiful sort of rendition soon. And yeah, let's start. Yes. We So already happy have to be audience there. Davinder ji हमेशा रहते हैं हमारे साथ. Thank you Davinder ji once again for joining. Naushad Ahmed is saying good evening. I am from Delhi, India. Thank you so much for joining us. नौशाद जी चलिए गाना सुनते हैं और बहुत सारी बातें भी करनी है हरजोत से हरजोत I think it's time now that you start with anything you would like to present to start the program today. What would you like to sing for us? सो वेन एवर वी स्टार्ट एनी थिंग हम लोग भगवान जी को याद करते हैं और कोई भी अच्छी चीज़ शुरू करने से पहले आई थिंक बहुत ज़रूरी भी है तो अभी आई थिंक आई स्टार्ट विद अ शब्द बिकॉज मैं Absolutely. बचपन से ही शब्द पढ़ती आ रही हूँ हम शब्द पढ़ते हैं तो इसके लिए हाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी हाँ, कि आप बिल्कुल। लोग प्लीज़ अपने हेड्स कवर कर लीजिए आई ऑल्सो डू दैट I'll just put my tanpura on.
Can you hear the Tanpura properly? Yeah. कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना सुर सबद तुम्हारा सुर सबद तुम्हारा मेरा मन भीना कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना एह मन भीना जो जल मीना एह मन भीना जो जल मीना लागा रंग मुरारा लागा रंग मुरारा कीमत कहीं ना जाए ठाकुर कीमत कहीं ना जाए ठाकुर तेरा महल अपारा कुल कुमाई लाल ना गुर मन दीना कुल कुमाई लाल ना गुर मन दीना सगल गुणा के दाते स्वामी सगल गुणा के दाते स्वामी बिनु सुनो एक दीना देह दरस नानक बलिहारी देह दरस नानक बलिहारी जियड़ा बल बल की ना कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना सुन सबद तुम्हारा सुन सबद तुम्हारा मेरा मन भीना कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना कोल कुमाई लाल ना गुर मन दीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you so much. That was a wonderful, very soothing, and peaceful start of the program. Thank you so much. This is actually the first डिवोशनल जैसे शब्द है तो वो पहला रिलीज हुआ है मेरा जी म्यूजिक के थ्रू। सो अच्छा। इफ एनीबडी वांट्स टू लिसन टू दिस अगेन तो ये इट इज ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इट इज रिलीज बाय जी म्यूजिक। द शब्द इज कॉल्ड गोल घुमाई लालना। सो आई एम अच्छा। हैप्पी दैट मेरी आवाज आप में एक शब्द थोड़ा सा रिलीज हुआ। हमको समझाइए इसका क्या, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट, बिकॉज आई नो देयर आर मेनी ऑडियंस हु वुड नॉट नेसेसरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। तो आप जरा समझाइए व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। इट इज अबाउट कि आप घोल घुमाई लालना गुरमन दीना इज कि मेरा मन सिर्फ
जो गुरु हैं उनके नाम पे ही रहता है और मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। सुर शब्द तुम्हारा मेरा मन भीना, मतलब मैं आपका जब शब्द सुनती हूँ तो मेरा मन बहुत खुश हो मन बह जाता है और जाए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मुझे बहुत उससे शांति मिलती है, पीसफुल लगता है। सो दिस इज़ अराउंड, मतलब पूरा शब्द इस चीज़ के ऊपर है। वेरी तो वेरी वो नाइस, इनके बारे में बोल रहे हैं। very nice. Thank you, Harjot. Kamalveer ji, Imtiaz da, over to you. हेलो। राइट। हेलो। जैसे कि हरजोत ने बहुत ही एक अच्छा शब्द गाया, एंड हमारे पंजाबी में शब्द को हम लोग गाया नहीं कहते, हम पढ़ा करते हैं, ऐसा बोला पढ़ा। जाता है, शब्द पढ़ा। एग्ज़ैक्टली। सो तो हरजोत, क्योंकि शी इज एक वेरी ट्रेन्ड म्यूजिशियन, क्लासिकल सीखा है, तो ये जो भी गाएगी, जो जिस हुँ, आपको पता ही है, जो क्लासिकल बेस होता है जब, तो वो शब्द भी गा सकते हैं उतना ही अच्छा, उतनी अच्छी गजलें गा सकती हैं, फिल्मी सॉन्ग गा सकते हैं। तो उससे एक जो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, और इस लड़की की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। So this is very nice to see that she sung it so fluently and so much with the expressions. तो थैंक यू पूरी सो feelings मच थी। अंकल, थैंक यू। So we will talk वी more about her, डेफिनिटली and she We'll will talk tell about, more yes, about we'll her. talk about her Over to. journey, because as I was saying that the youngsters mainly they think they love to sing Bollywood songs, but not That's right. necessarily that they always understand that they need to have the solid base of classical background. आपका एक बार हो जाए बेस तैयार, रियाज करके अच्छे से, उसके बाद आप जो भी गाओ आप अच्छा ही गाओगे सिर्फ, because you would That's know right. what you were singing, है ना? बिल्कुल। इम्तियाज दा? Yeah. I think it would be very sort of appropriate for Harjot to talk Absolutely. about her musical journey to start with, because then she can pay respect to her gurus as well, which is also important, as well as singing Sabat. So yeah, please tell us, Harjot, how did you start learning music? Who and how just tell us about the beginning of your journey, or I mean so far. Definitely. Thank you. So the thing is, when I was 8 years, and my dad, he also sings. So मेरी दादी भी गाती थी और my father also sings and my बुआ also sings. So ये तो फैमिली से ही आया। एंड जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा मुझे गवाते थे और सुनते थे कि सुर पकड़ पाती हूँ या नहीं। तो उन्होंने ही वो चीज़ डिस्कवर की कि हाँ, मैं गा सकती हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग मी हिमसेल्फ बिकॉज़ ही हैज़ आल्सो लर्न्ड क्लासिकल म्यूज़िक। सो उन्होंने मुझे हमेशा से यही बोला कि क्लासिकल इज़ योर बेस, आपको ये स्ट्रॉन्ग रखना है, आप उसके आगे कुछ भी बनाओ एंड जो भी गाओ वो आपकी चॉइस है, व्हाटएवर म्यूज़िक दैट यू लाइक एंड व्हाटएवर दैट यू वांट टू सिंग, you should sing, and but he said that you should have a very strong classical base. सो उन्होंने शुरू से ही मुझे खुद सिखाना शुरू किया एंड देन मैं बहुत सारी क्लासेस पे, मतलब उन्होंने मुझे क्लासिकल सिंगिंग प्रॉपर सीखने के लिए मुझे गुरु के पास भेजा। सो माय फर्स्ट क्लासिकल गुरु वाज मिसेस पारुल बैनर्जी। एंड आंटी ने मुझे बहुत एकदम बिगिनिंग से सिखाना शुरू किया। आई वाज इन स्कूल, आई रिमेंबर आई वाज 12 और 13 इयर्स ओल्ड। एंड वहाँ से मेरी क्लासिकल म्यूज़िक सीखने की जर्नी शुरू हुई और साथ-साथ पापा भी सिखाते थे। माय मॉम यूज्ड टू टेक मी टू अ लॉट ऑफ सिंगिंग क्लासेस। मम्मा रोज़ मेरे को इतना, आई रिमेंबर हर बार स्कूल से आके कुछ क्लास होती थी तो शी यूज्ड टू टेक मी कि मैं लेके जाऊँगी। शी विल स्टे देयर विद मी एंड देन शी विल गेट मी बैक होम। So I think my mom and dad, they have played a major role in whatever I'm doing today, because उन्होंने मुझे शुरू से इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना सपोर्ट किया कि तुम्हें जो करना है, whatever makes you happy you do that. And music, undeniably it makes me very happy and इट गिव्स मी द पीस। और वही चीज़ मेरी पढ़ाई में भी हेल्प हुई बिकॉज़ म्यूज़िक से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी स्टडीज़ सफ़र करेंगी, बट इन माय केस आई रियलाइज़ कि म्यूज़िक ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी स्टडीज़ में, बिकॉज़ इट इम्प्रूव्ड माय कंसंट्रेशन लेवल। और मुझे अगर ब्रेक चाहिए होता था पढ़ाई से तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब लाइक इट्स लाइक मेडिटेशन। तो आप प्रैक्टिस भी कर लेते हो और आपका एक पढ़ाई से और सब चीज़ों से एक ब्रेक भी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने अपने स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस में भी गाना शुरू किया। आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अ, अनिल बिस्वास जी एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे,
बहुत बड़े, एंड उनकी डॉटर हैं शिखा विश्वास जी। उनका एक संगीत स्मृति करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर आई स्टार्टेड सिंगिंग। दैट वाज द स्टेज जहाँ मैंने पहली बार परफॉर्म करना शुरू किया। एंड देन व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, 10th ग्रेड, उधर my parents, they took me to Pandit Baldev Raj Verma ji. He is a very renowned classical singer, and उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। और वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर, मैं क्योंकि बीच में अभी मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो थोड़ा कंटिन्यूटी रुक गई, पर मुझे एक चीज़ कभी नहीं भूलती कि जो पहला पूरा साल, लाइक एक पूरा साल मैंने सिर्फ एक राग सीखा उनसे, व्हिच वाज़ राग यमन। पूरा 1 साल उन्होंने सिखाया, और उतना एन्जॉय मैंने आई थिंक क्लासिकल म्यूज़िक को तब शुरू किया करना जब उन्होंने सिखाना शुरू किया, क्योंकि हर रोज़ उसी एक राग में एक नई लर्निंग होती थी, व्हिच वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये एक राग में कितना कुछ है सीखने के लिए। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैं उन तक पहुँची। और बीच में मतलब मेरे स्कूल के म्यूज़िक टीचर्स, नवीन जैन सर, कीर्ति मैम, ये जो स्कूल में भी मुझे इतना सपोर्ट करते थे, तो सब कुछ साथ-साथ चलता रहा, एंड मॉम-डैड ने भी पूरा सपोर्ट किया, एंड पापा भी अभी भी सिखाते हैं, अभी भी हम लोग साथ बैठ के कई बार रियाज़ करते हैं। और आई रिमेंबर पापा मुझसे रोज़ ऑफ़िस से आके पूछते थे कि आज तुमने रियाज़ किया कि नहीं किया? और अगर मैंने नहीं किया होता था तो मुझे बहुत डाँट पड़ती थी, और मुझे उसी टाइम बोलते थे कि अभी करो। एंड हर संडेज़ को, वीकेंड्स को, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, एंड हम साथ में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे साथ में ही रियाज़ करते थे। So this is how my journey has been. Then I went for a competition which was for 91.1 Radio City in Delhi. So उनका एक सिंगिंग का कॉम्पिटिशन था, सुपर सिंगर, वेयर मैं पहली बार किसी इतने बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन में गई, और वहाँ पे आई वाज़ द फर्स्ट रनर अप। उसके अगले ही साल मैंने वहाँ एक जिंगल गाया, और उसी साल में मैं द वॉइस इंडिया में सेलेक्ट हुई। वहाँ पे मैंने आई वाज़ इन टॉप 8 ऑफ माय टीम, एंड उसके एकदम अगले साल ही सारेगामापा हैपेंड, एंड मतलब ये एक साथ सब कुछ होता गया, और सारेगामापा तक जब मैं पहुँची तो वहाँ पे आई वाज़ देयर टिल टॉप 6। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं कभी सोचती नहीं थी कि मुझे कहाँ तक जाना है। मेरे दिमाग में बस ये रहता था कि मुझे बस अभी जो परफ़ॉर्मेंस आ रही है वो अपना बेस्ट देना है। उसके बाद निकलूँगी, रहूँगी, कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट, मतलब मेरे हाथ में नहीं है। सो हर बार यही दिमाग में रहता था, और करते-करते आई रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ दैट शो, एंड फिर वहाँ से मैं प्रीतम सर की टीम में थी, और ही वाज़ अ मेंटर देयर। तो मैंने उनसे बात किया, एंड उनको भी मेरा गाना बहुत पसंद था। आई टोल्ड हिम आई वांट टू लर्न साउंड इंजीनियरिंग, एंड उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन माय स्टूडियो एंड लर्न इट ऑन द जॉब। मतलब आप काम करते हुए सबको देख रहे हो। इट इज़ अ प्रोफेशनल स्टूडियो, सो यू शुड लर्न इट देयर। यू कैन सिंग आल्सो, यू कैन आप अपने गाने का भी रख सकते हो और साउंड इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। So that's how I got into sound engineering as well. I joined an academy, and abhi I am just happy that I'm doing music. So I think that's the best thing that could happen to me. Although I planned to do law, but I ended up doing music full time. So I'm happy about that. I think that's the best decision you have taken to do music. Here are quite a lot of comments, which is good to read. The first one is Mahinderjit Singh Vasir is saying she has a bright future as she is born to sing. So you are not actually born to be a lawyer, Correct. right? So you have to continue Thank to you sing. so much, Uncle. Okay. Mina Mahajan Ganguly saying congratulations, Thank you. Harjot. Thank you. We have so many audience here, Harjot. You'll be pleased to see there are audience from all over the world joining here today. I'm so happy. Akash Bandir is saying, I'm from Uttarakhand. He has joined from Uttarakhand. Mili Bias Basu saying, what a beautiful start. It was indeed a beautiful, soothing start. We have Sanjay Saxena, Hina Bar, Jagjit Singh Bhatia, Vishal Kumar Salvi, Bobby Delbir Nandra,
who is joining us from Sheffield and one of our greatest supporter, and she supports Kamal Virji a lot. She is a great supporter. So hello, Bhabiji, good to see you here. Balwant Banga is saying superb. Jagir Alam, दीपक चंद्र घोष, अभिजीत रॉय, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं हरजोत. But what I would like to, I know Imtiaz that you have got questions, but I just want to know something. Like Harjot, you are very young, so you started with your classical training with Baba, as you said, and you have then how did you, or what motivated you to move to Bollywood music? I was And always before you answer that, Harjot, I just wanted to just a technical thing. Chandradi, if you can mute your mic, then there's no echo. I think we're going to sort out the problem later on. There's an echo coming in. We can't hear any echo, but yeah, okay, I will mute. Right. So I was Before all sorry. just before you sing the next thing, or I just wanted to mention that Chandraji, the first name you took, Mahinderjeet Singh Basir, he is a very famous music director of the film industry, and he's the one who introduced Jagjit Singh, made Jagjit Singh sing first. He's a very good singer himself and a violin player. And his son, Chintu Singh Vasir, is a famous guitar player who used to play all the time with Jagjit Singh Ji. So we are very lucky that he is in the room today listening to Harjot. He's a legend. I'm honored that everybody is here. It is an honor for me to sing Your in front of microphone is all of mute, you. Chandradi. Thank you for joining us, Mahinder Ji. It's a great pleasure to have you. Namaskar. Harjot, just Thank you. say about your Bollywood journey, and then of course I'm sure the audience would love to hear another piece of music from you. So I was always fascinated with Bollywood music since childhood. I've been listening to it, and as I said, Chikha auntie, I mentioned Chikha auntie in my journey, and उन्होंने मुझे जब स्टेज जहाँ उनके जब मैं शोज़ में गाती थी, तो हम लोग उनके जो शोज़ होते हैं वो पुराने गानों के ही होते हैं. सो मैंने पुराने गाने पहले गाने शुरू किए स्टेज पे और आई रिमेंबर आई हैड मैं थोड़ा-सा डरती थी स्टेज पे परफ़ॉर्म करने पे उस टाइम पे और वो धीरे-धीरे जब मैंने पुराने गाने मुश्किल से मुश्किल अटेम्प्ट किए और उन्होंने मुझे दिए मतलब शी यूज्ड टू गिव मी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स जो मैंने कभी नहीं सुने बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे पैदा होने के बहुत सालों पुराने मतलब पहले के गाने हैं वो. सम ऑफ देम वर सो ओल्ड कि वो मेरे पापा के पैदा होने के भी पहले के थे. ही टोल्ड मी कि हाँ, ये तो मेरे भी पैदा होने से पहले के गाने हैं। तो बहुत बड़ी बात थी कि मेरा एक्चुअली इसीलिए आई फ़ील कि आई एम लकी कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला सो आई कुड मेरा बॉलीवुड की तरफ भी एक बेस स्ट्रॉन्ग बन पाया बिकॉज़ पुराने गानों से आप जितना सीखते हो, इतने अलग-अलग टाइप के और इतने मुश्किल गाने होते हैं, तो मुझे हर एक गाने से इतना सीखने मिलता था तो वहीं से मेरी पुराने गानों से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड मेरे को देख के जैसे मैं सारेगामापा देखती थी पापा के साथ बैठ के आई रिमेंबर मैं जब छोटे होते से ही देखती थी तो मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि मुझे वहां पहुंचना है आई वॉन्ट टू बी देयर ऑन दैट स्टेज आई वॉन्ट टू फील हाउ इट फील्स टू सिंग ऑन दैट स्टेज सो वो ही फीलिंग से मैं देखती थी एंड फाइनली जब वो हुआ हम लोग सब लोग बहुत खुश हुए माय पेरेंट्स मॉम डैड दोनों ही आई रिमेंबर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं टॉप 12 में सिलेक्ट हुई थी तो ऐसे करते-करते ही मैं टुवर्ड्स बॉलीवुड जाती रही और जब मैंने सारेगामापा के स्टेज पे परफ़ॉर्म करना शुरू किया, तो वहाँ पे बॉलीवुड गाने ही गाते हैं। तो मैंने और बहुत सारे क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है एक गाना प्रिपेयर करने का। दे गिव यू अ वेरी लिमिटेड टाइम कि आपको इस 1 हफ्ते में 2 गाने प्रिपेयर करने हैं एंड दिस इज़ एवरी वीक क्योंकि हर वीक एपिसोड्स आएँगे। तो वो सब करते-करते मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई एंड आई sang सो मेनी काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स कुछ फास्ट नंबर्स कुछ एकदम क्लासिकल बेस्ड नंबर्स सो मुझे हर तरह का गाना गाने मिला और आई एम मतलब अभी भी मुझे वो याद है दिन जब मुझे सारेगामापा की सुनिधि का टाइटल दिया गया था व्हिच वाज़ अ वेरी, वेरी बिग डील कि इतनी बड़ी बात मुझे बोली। तो ये सब चीज़ों से मुझे
और encouragement मिलता रहा and I started going towards Bollywood. But आज भी अगर मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो मुझे शबद पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अभी भी मुझे क्लासिकल का रियाज़ करना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मुझे वो सेमी क्लासिकल, गज़ल्स, ठुमरी ये सब सुनना, गाना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक म्यूज़िक इज़ समथिंग कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एवरीथिंग यू शुड लिसन टू एवरीथिंग एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन जो हर तरह का गाना गाए और क्योंकि मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ एंड मैं गा पाऊँ हर तरह का गाना, तो आई लिसन टू एवरीथिंग एंड आई ट्राई टू सिंग एवरीथिंग। Thank you, Harjot. Imtiazda, shall we just listen to a song now before you ask him? Yeah, Harjot, क्या सुनाएंगे आप अभी? सिंस अभी क्लासिकल की बात भी हुई, तो आई थिंक आई सिंग अ सेमी क्लासिकल गज़ल इफ Please दैट do. इज़ या I'll do that. One second, I'll just put my tanpura. Playing from Harjot. Sorry. Actually, I'll sing another one, not this one right रेणु ये आसमां ये ज़मीं ये घटाएं मेरी हैं ये आसमां ये ज़मीं ये घटाएं मेरी हैं तू मेरा है तो ये सारी तू मेरा है तो ये सारी फिजाएं मेरी हैं फिजाएं मेरी हैं ये आसमां मगनी सा मग गमधानी निसा मगनी सा निधा पामा गमनी धा पामा गरे रे गमा पा मगरे साधनी का सा हमारा प्यार अब इससे हसीन क्या होगा हमारा प्यार अब इससे हसीन
क्या होगा, उठे हैं हाथ, उठे हैं हाथ तेरे और दुआएं मेरी है, तू मेरा है तो ये सारी, तू मेरा है तो ये सारी फिजाएं मेरी है, फिजाएं मेरी है, ये आसमां, ये आसमां, ये ज़मीं, ये घटाएं मेरी हैं। Beautiful. Beautiful. Thank you so Beautiful. much. Thank you. So expressive. So expressive. This is one of my So favorite this is, ghazals. I always say that, yeah, I always say about singers that सुर और ताल में तो बहुत सिंगर्स गाते हैं, सभी गा लेते हैं सुर और ताल में, पर उससे कहीं आगे म्यूजिक है। उसमें फीलिंग्स लाना, उसमें एक्सप्रेशंस लाना, उसको सुर भी देखो, सुर और सुर में भराव, दो चीजें अलग अलग हैं। सुर तो लग जाती है पर उसमें भराव, ये सारी चीजें लड़की गा रही है इस उम्र में। गॉड ब्लेस हर। I think music is a way to express what you know feel, and हर एक गाना एक expression ही होता है. So I think that's the most important thing, expression and feel. So Very I'm nice. glad आपको Yes. पसंद आया. And also your Even dad just Shikha wrote that Shikha Vishwas ji is also in the room listening to you now. a lot of Thank you people for are joining. here. Thank you for joining, Shikha Didi. It's lovely to meet you here, although it's virtually, but thank you. Imtiazda, would you like to ask anything to Harjot? No, I think coming to the before we were in the studio, I was just making some jokes with Harjot, saying that we're at the same age. You know why? Because for to be a musician, you have to be very young at heart most of the time. Otherwise you can't really. So True. because I think because someone like you who has been doing music from a very early age, and perhaps you have done a lot of sacrifices in terms of playing with your friends and watching telly, watching cinemas, and Exactly. how do you feel? I mean, how do your peer group, your friends who are actually probably enjoying a little bit more life than you, do you actually regret that if you could do that sort of thing? I'm just asking a very peer group question here. No, actually, it's a very relatable question because there was a time when I used to, tell my mom and dad कि क्यों मैं मतलब when I was very young, when I was in school, मैं बोलती थी कि क्यों मुझे सब कुछ मिस करके when all my friends are playing, they are going out, they're having fun. Why do I have to go to classes and miss all of that and go to different classes, not just music. I had to take extra tuitions because I used to miss a lot of my studies because of my shows and everything, not the stage performances in school and all the competitions that I used to take part in. So at that time मुझे लगता था, but अब मुझे लगता है कि I think my parents did a very, very great job by, making me go to all of those classes because वो मेहनत भाई पापा बोलते हैं, मम्मा बोलती है कि यार आई थिंक सब बोलते हैं कि मेहनत हमेशा काम आती है। चाहे अभी नहीं आएगी, कभी ना कभी तो काम आएगी और जो भी आप पढ़ोगे, जो भी आप सीखोगे वो कभी वेस्ट नहीं जाता। नॉलेज नेवर गोज़ वेस्ट। दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज। सो दैट अभी जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, इट वाज़ ऑल वर्थ बिकॉज़ जो मेरे को मिल रहा है वो मैं आई एम लकी दैट
I have this talent and I can pursue it and I'm able to pursue it. तो अगर तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे उन क्लासेस में नहीं भेजा होता तो शायद मैं बहुत लाइटली लेके म्यूज़िक छोड़ देती। बट आई एम ग्लैड कि वो तब भेजा। बट हाँ, तब तो मैं बहुत बहुत रोती भी थी कि मुझे क्यों भेजते हैं क्लासेस पे। आई ऑल्सो वांट टू गो आउट एंड हैव फन। But it was a balance. Sometimes I used to go out. I still go out with my friends. I still take out time to, have spend some time with my friends also. So yeah, I think it worked out well ultimately. I am sure now it's even more fun that your friends can watch you Yes. on the television in different shows. So that's the fun as well, isn't it? Yeah, they feel very तो proud और and that makes me I'm happy. sure, I'm sure, I'm sure. और कुछ सुने अभी? बिल्कुल। Actually, यहाँ पे Davinder uncle has been asking me to sing uh, a Bengali song, and आप बंगाली हैं, चंद्रा आंटी। So बिल्कुल बंगाली हूँ मैं, I और think हमारे इम्तियाज भाई भी, ये भी बंगाली हैं, और अच्छा, आप कमलजीत भी बंगाली आधा I'm more बंगाली हो गए Bengali. I'm हमारे। more Bengali than her. I'm more Bengali than her. Yeah. तो फिर तो एक बंगाली तो तो गाना मैं ही भी बंगाली पड़ेगा। बनने की हाँ हाँ कोशिश जी। प्लीज। And मैं भी Davinder ji is बंगाली half बनने की Bengali कोशिश now. कर He रहा is हूँ। learning Bengali. I have also प्लीज started learning a little Bengali क्योंकि जहाँ मैं काम करती हूँ लाइक विद प्रीतम सर, वहाँ पे सब बंगालीज हैं मोस्टली, हाँ, तो थोड़ी प्रीतम दा थोड़ी के साथ समझ तो आनी बांग्ला में है। कभी कभी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो हाँ चलिए जी। बांग्ला गाना सुनते हैं। ठीक है। मैं शायद थोड़ा प्रोनंसिएशन अगर कहीं गलती हो नो जाए तो प्रॉब्लम, नो पहले ही प्रॉब्लम एट सॉरी। ऑल, आई ट्राई माय बेस्ट कि ना हो। नो प्रॉब्लम। I'll once again I'll play the track. So this is one of my favorite Bengali songs. जब मैंने सुना था तो मुझे मतलब समझ नहीं आया था, पर इतनी प्यारी मेलोडी थी एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस कि बंगाली मेलोडीज़ बहुत स्वीट होती है, बहुत प्यारी होती है। तो ये वाला गाना मैंने कवर किया एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर इसका ट्रैक के साथ कवर बना के मैंने डाला। और ये गाना आई थिंक अभी भी मुझे काफ़ी मीनिंग नहीं पता है, बट जस्ट बिकॉज़ आई लव द मेलोडी, तो आई विल सिंग दिस वन। आज ঠোঁটের কোলাজ থামালো কাজ, মন তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম, নাম বুকের বোতাম হারানো ঘাম, আজ কেন যে খুঁজে পেলাম। দিন এখনো রঙিন, এই দিন এখনো রঙিন, তাকে আদরে তুলে রাখলাম। নাচ ঠোঁটের কোলাজ থামালো কাজ, মন তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম। মন রাখা আছে কোন ঈশান কোণে বিষণ্ণতা, চোখ কাটাকুটি হোক সহজ খেলার সময় কোথায়, এই নরম সুখ হাওয়ায় হাওয়ায় ছেড়ে যাক, এই সন্ধে নামক ব্যথা তোমায় ছেড়ে যাক।
রূপ এই তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম নাম বুকের বোতাম হারানো খাম আজ কেন যে খুঁজে পেলাম আজ ঠোঁটের কোলাজ থামালো কাজ আজ কেন যে খুঁজে পেলাম That's it. Beautiful. I think no one would understand that you are not a Bengali person, if you see what I mean. I mean, you know that it was very soulful, and I think there are lots of comments coming out. I think your mom is there. So welcome, mom. Mom? I think your mom. I Yeah, think she's Neeraj there. is saying, yeah, she is there. Yeah, she's here. Yes, Simya Lola, yes, yes. that's my mom. So, yeah, So, welcome to the show, and we are so much fascinated and sort of overwhelmed with the beautiful song from Harjot. And Kamalbiji, you want to say something now? Because I was thinking of listening to her some of more songs because we have very limited Yes, time we will today. definitely listen to more. What I was saying that, this the calmness in singing, not many singers have. They rush for the words, and she sings so calmly, like there's all the time in the world to fit into the gauge of the rhythm. Yeah. So many singers rush for the rhythm, which sounds as rush, but she, like Jagdish Singh, this is why I always admired him so much. He had always peace and calm in joining the rhythm. She's doing the same way. Yeah, I'll just give you one very quick compliment of this Bengali song, particular one. There's a word called jak with the Kaur at the end or K at the end. And I've seen many, because I do sing Bengali songs, and that kind of this end letter to do it in pitch perfect is fantastic. When you say ja, a, ak, and but it came to my, because so you really played very much attention to the detail as well as singing from your heart, and music has got no boundaries, and you proved that. Fantastic. I mean, it was a absolutely fantastic performance. I'm glad because I was really nervous about this one since I'm not opened the lyrics. I just remembered the lyrics and I was singing according to that. So I thought kahin kuch gadbad ho gaya to That's why you sang it so peacefully, because you was not looking at the lyrics. That's why you had the time to express yourself. And thank you to I must say thank you to Devinder ji for suggesting you to sing a Bengali song, Devinder Lambaji. And I think it's his birthday today as well. Happy birthday, Devinder ji. Oh, happy birthday, Devinder ji. Happy birthday. But I must thank Kamalveer ji Harjot, because he is the one who has introduced me to you. And as Kalakar, we always look for talents. We always look for good music. And I say that my headline is "We bring the best." So our audience has got a very high expectation from each of Kalakar's events. So obviously, I'm so thankful to Kamalveer ji for recommending your name for Kalakar's. And I told her in the morning that with Chandraji's organization, Kalakar Arts, you are very lucky that she have chosen you to sing, because we are talking about all the top singers and the musicians of India. They come on this platform. So you are one of them. I listened to Ghulam Ali the last week only when he was here. I think last week. I mean, that is a huge honor for me to be here where he has also performed. And thank you so much, Kamalveer uncle, for calling me here. And thank you, Chandra and uncle. It's I think we should listen to you more now, because we got hardly. We would. And also, I think I would like to now meet with your dad, because he's your teacher. He has started and he asked you to do your riyaz if you didn't do it properly. So obviously he is behind all this success. So if you could please have Hardeep Singh Arora ji with us now. Yes. I think he'll be here. Just a second. Yes. Okay. So we also want to listen to her, one of the TV serials little numbers, just a couple of lines of those.
so that Yeah, people know Why that. don't you do that first while while your dad waiting for comes, the yeah, while dad joins yeah. us? Yeah. Would you like to sing the Yeah. TV serial song that Kamal Viji sang? Sure, I'll do that. 1 second. I'll just tell Papa एक बार. Just 1 second. Okay, sure. Papa. Yeah, I'll sing. 1 second. I must tell the name of those serials you have sung for. This one I sang for ये रिश्ता क्या कहलाता है serial on Star Plus. Wow. रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, लगी दिल पे तीरों जैसी तेरी मेरी बातें सजना, हो झोंके हवा के न जाने कैसे उड़े आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की गई दुनिया, हाय एक दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता, रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, तेरे मेरे सपनों का था जो घर, जाने उसे अब किसकी है नजर, अरमानों से बनाया था उसे, सोचा जाएगा आएगा यूं बिखर, हाय रुक है गई तेरी मेरी बातें, ख्वाबों से करती थी वो बातें, बेवजह सी अब है ये सारी बातें, जाने दो ना क्या है सोचना, झोंके ये हवा के जैसे उड़े आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की गई दुनिया, हाय एक दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता, हाँ रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, That's it. That's beautiful, and that shows Thank you. how versatile you are, from classical to semi-classical, Bollywood music, and then very popular TV serial songs. And that's what I tell everyone, that classical bass, It helps. having it, थोड़ा सा रियाज करिए, हो सकता है कि आप एक राग एक साल में एक ही राग सीखे, but that will Correct. take you a long way. Is dad here yet? Yes, he's right here. I'll give my earphones to him because फिर वो आपको सुन पाएंगे. So just अच्छा a जी, second. thank you. Sure. मैं करती हूँ. Namaskar, Hardeep ji. Thank you. Hello, everybody. Hello, Ji. Thank you so much. And we are so proud, as you are, to have Harjot, such a young talent. See, I'm sure she will go a long way. And we would like to thank you for being there, for your support, because she has told us that without your support, आप रियाज क्यों नहीं किया, अभी बैठ के रियाज करो, without this ये नहीं होता है, because I can easily relate this to my dad.
So that's what my dad used to do. स्कूल से आके मैं खेलने जाती थी और पापा घर पे आके अभी तक रियाज नहीं किया, अभी बैठ जाओ रियाज करो, खेला बाद. So that I can easily relate. So thank you so much. Hardeep ji, आप खुद गाना भी गाते हैं. Mom is also there in the she's also watching. Mommy is also watching. Hello, Mommy ji. Thank you so much for your support. Hardeep ji, we are almost coming to an end of the show. That's why I wanted to invite you here. आप गाना गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और आपने इसको सिखाया और हम लोग मेरे सारे जो ऑडियंस है, I'm sure they would like to listen to you both singing something together. Okay, so आप बताइए आप क्या सुनाएंगे हमें. Thank you Chandra ji, thank you Dr. Imtiaz, thank you Kamalbir ji, and this is an amazing moment for us that we are here on your platform, and Shikha ji is also there who has joined this today's show, and I remember that she used to guide Harjot, and of course I also used to teach her, and it was kind of a big inspiration for us. That she was very young when this platform was given by her to Harjot. And for the riyaz also, whenever I used to come from office, so even during even if I used to come so late, maybe 9 o'clock or sometimes even 10 o'clock, still we used to sit for riyaz for 1 hour or so, and we used to practice, and Sundays of course we used to practice a lot. But yes, she has done a lot of hard work, and I'm very proud. We both parents are very proud that she has made her mark and she has reached to this level. And okay, now we will sing a ghazal together. One of our favorite ghazals of Jagjeet ji and Chitra ji, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है. बहुत बढ़िया. That's one of my most favorite ones, in fact. That's my favorite too. We have 7 minutes left, so I know that we are very much precious on time. Mr. Kaur is asking several times, requesting this particular song, तुम मुझे भूल भी जाओ, duet. Oh yes, two of those lines at least we can sort of we will sing maybe a few lines of that, because few lines are not different. ठीक है. Thank you. Because बहुत लोगों ने request किया था. So let's first sing that song. तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको. तानपुरा दे ना. स्केल नहीं पता. यही रखे ना. I'll find out this scale, 1 second. यही स्केल है. आपका ये वाला है. तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है. तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है. मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है. तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है. तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको. जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है,
भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आंख चुराओ तो ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आंख चुराओ तो ये हक है तुमको। वाह, क्या बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया हरदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। फिर अभी हम Such a लोग वो famous- गाना सुने, हाँ जी। हाँ, थोड़ा वो जगजीत सुनेगा। जी, वो गाना सुने अभी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का हाँ खेल। जी, हाँ जी। नहीं आती। एक सेकंड। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। अच्छा सा कोई मौसम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया दुनिया बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। किस राह से बचना है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए
तो सोना है दुनिया दुनिया. Thank you. Thank you. Thank you so much, Chiranjeeb ji. Thank you so So much. beautiful. This is one of my favorite songs actually. मिल जाए तो मिट्टी है, खो Oh. जाए तो सोना है. It's, So हो much. जाए तो सब this is yeah, it's देखिए a आप beautiful जैसा ghazal. तो I would like to give my love to you, Harjot, and a big hug to you from London. Thank you so Thank you much. so Thank you much. so much for joining us, and I'm sure and pray and bless that you go very, very, very high out there in the music world. और दुनिया भर के लोग आपको सुने, दुनिया भर के लोग आपके गाना सुन के आंसू बहाए, खुश भी हो जाए. Thank you so Thank much. you. It That's Thank you means a true. so lot much. to That's me. true. Thank It was such a lovely evening and बहुत अच्छा गाया In- हरजोत एंड हरदीप जी. आप दोनों ने लास्ट में कितना अच्छा गाया. और आपको तो पता ही है सुधा मल्होत्रा जी का जो आपने गाया था, ये जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे इसी डिनर टेबल पे सुधा मल्होत्रा जी ने कई बार हमारे साथ डिनर किया. हम लोगों ने इकट्ठे प्रोग्राम किए हुए बहुत बार. शी इज सच ए वंडरफुल पर्सन. और मैंने आपका गाना भेजा था उनको एंड आई एम वेटिंग फॉर हर कमेंट्स ऑन योर सॉन्ग. सो होपफुली शी विल. तो शिखा जी सुन रही होंगी जरूर. और वो शिखा जी ने हमेशा हमको इतने अच्छे गाने गाने के लिए दिए हैं, खासतौर से हरजोत को. लाइक शी अंडरस्टैंड्स हर वर्सेटिलिटी and she has given her all types of song which has helped Harjot to develop so much. She has now become a versatile singer because she has been guided by eminent personalities. And thank you so much. Thank you, Chandra ji. Thank you, Dr. Imtiaz. And thank you, Kamalbir ji. And thank you everyone who has come to watch this program. And so Thank you. I beautiful. think, I mean, it's been a pleasure from our part. It's been a pleasure that to have you both here today. And I could just summarize by saying that, the love that you two, when you were singing together, Thank you. that is what is needed right at the moment across the world. Yeah. In this tough time. And please, I'm pretty sure Harjot will go far and far up and up. But just remember, whatever you do, you got to have heart in it. Yes. Yes. And that is what we feel from your singing. And God bless you. Thank you very much. Thank you so much. That means a lot Thank to you, me. Harjot. Thank you very much. Harjot ji. Thank See you you so again much soon. for having us, and it was an honor to be here in front of everybody and all of you. And I really hope to meet you all in person as well. Very soon. Don't forget, we are kind of same age. Meaning I'm younger. Yes, definitely. You See you and I are soon. same age. See you soon, Harjot. Take care. Take care. Thank you brother. so much. Thank You you. too. You too. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. That was a lovely, lovely first segment of today's program. Moving on to the next part of this program, I'm very glad to invite one of my good friends whom I have known since my childhood. He has become a great musician. He has traveled worldwide, performed for many, many, many big concerts. Currently, he is also based in London, teaching as well as performing and directing music projects. Very well known, renowned. There is a kahavat in Bengali, Triveni Sangam, where we say the three rivers meet together, so becomes very auspicious space for us. Now you can imagine if you truly love Hindustani classical music and know even a little bit about the gharanas. रामपुर घराना, ग्वालियर घराना, पतियाला कौसर घराना, ये तीन घराने जब एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा? एक त्रिवेणी संगम ही तो होगा ना. तो उसी की बात करेंगे हम आज. As I have been saying, the great vocalist. He also sings excellent semi-classical, light music as well as Bengali songs. So let us welcome my dear friend, eminent Hindustani classical vocalist of the West, Sri Chiranjeeb Chakraborty. नमस्कार. Namaskar.
Namaste. Thank you, Kalakar Arts. Thank you, Chandra, Imtiazda, and Kamalvirji. I'm really grateful. Thank you. You're Thank welcome. you for We're so joining pleased to us see you today, in this platform. চিরঞ্জীব। Yeah. ভীষণ ভালো লাগছে, অনেকদিন মুখোমুখি দেখা হয় না, তবে হ্যাঁ, অনেকদিন। ভার্চুয়াল আড্ডাটাই বা মন্দ কি বলো? ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি। আর তুমি যা কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছ, it's really a great work. You know, I've seen maybe all of your work, in your page, and it's fantastic. And all the great master they performed, they shared their stories and expressions. It's a great job. Thank you. Thank you for your support. Without the friends' support, how would I continue? Of So course. thank you for coming here today, and we have been looking forward to have you for a long time. Unfortunately, due to circumstances, I had to change the date couple of times, which happens at times beyond my control. But Yeah, finally, you are here. yes, So yes, I'm here. before we start anything, I have a lot of argument with Chiranjeeb, Kamal Virji. Whenever we meet, we have an argument about something. So before we start that, and before we talk about his musical journey, I'm sure the audience would love to hear something from him. And this is a Guru Parampara, Guru Shishya Parampara session. So I can Yes. see another blue Punjabi sitting next Yes. to Chiranjeeb. I can see half of it. So that's Yeah, not yeah, the Guru yeah. Shishya He's Parampara. here. He's Hello. here today. Say hello. Hello. Kamal Viji, you know Chiranjeeb is a great singer. He is a I know wonderful him. I know him. performing artist. But you don't know this little one, the junior Chakraborty, how beautiful he sings. So you Wow. will hear that today. He's just started learning, and all of your blessings. He will try today to sing. বাঁশির couple of মতো things. মিষ্টি গলা ওর, আমি তো সেদিন শুনেছি। Yeah, ভীষণ মিষ্টি he গলা। sang in our children's festival the other day. It was fantastic. Yeah. Yes. শিষ্য Very, very পরম্পরায় nice. গুরুজি থাকলে গুরুজি would have been very happy to see চিরঞ্জীব as well as পঞ্চম। আমি তো বলি ওর গানের নামের মধ্যেই সুর আছে, তো ও কি করে সুরের বাইরে যাবে? চিরঞ্জীব Thank you. একটু গান শুনি, আমি জানি হ্যাঁ, আমাদের নিশ্চয়ই। সমস্ত দর্শকরা অপেক্ষায় আছে। নিশ্চয়ই আমি গান গাইছি। তুমি আমার প্রিয় রাগটা গাও প্লিজ। হ্যাঁ, ওটা গাইবো। দেখেছো তো, ইমতিয়াজ দাও কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না কোনটা তোমার প্রিয় রাগ। আমি জানি। You know him so well, but he knows you so well. Let's put it this way. না, এই জন্যই তো ঝগড়া ওর সঙ্গে, ঠিক করে কথাটাও বলো না কেন মাঝে মাঝে। আমার গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তাই তো? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, তুমি গাও। ঠিক আছে। I'm starting, it's a very special program for me, and as you know that I have learned from Rasaraj Pandit Nilan Bandhu Bandyopadhyay from my childhood, and I'm trying actually to sing a Dhrupad composed by him in Rag Purvi. So I'm just trying all of your blessings. No. Achala pada johi pa
सोहे गाए राग रोग बनाए सुरभिलास विचित्र मन रे जाए अचला पद मृदंग देत छांद मधुर गुरु देत सवै ज्ञान जीते सारा कंठ शोभा देत बढ़ाए अचला पद जो ही पाए सोए गाए राग रोग बनाए सुरविलास से भी চিরঞ্জীব, তোমার সাউন্ডটা হঠাৎ করে একটু থেমে গেল মনে হলো। হঠাৎ করে একটু তোমার সাউন্ডটা থেমে গেল, আর তোমার মাইক্রোফোনটা একটু যদি প্লিজ আনমিউট করে নাও। মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নাও একটু প্লিজ। এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। হঠাৎ করে গানের শেষের দিকটায় মনে হলো সাউন্ডটা একটুখানি চলে গেছিল। ওকে 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 only for 10 seconds, not more হ্যাঁ than হ্যাঁ, that. So it's okay. only আমার for মনে হয় এটা অটোমেটিক কিরকম আনমিউট হয়ে গেছিল। আমি আচ্ছা, তুমি শোনা যাচ্ছে তো, কোনো ইকো নেই তো? এখন না, কোনো ইকো নেই, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আমি Right. তোমাকে বলি, Good. আমাদের এখানে প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুরা সবাই এসেছেন, তোমার গান শুনছেন। আমি তো জানতাম সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সঞ্জয় রয়েছে, সঞ্জয় one of the great singers based in London as well, who sings mainly concentrates on Tagore as well as light music. সঞ্জয় দে, বাহ, সঞ্জয় বলছে চমৎকার, দুর্দান্ত হোক অনুষ্ঠান, শুনছি, খুব ভালো লাগছে, তুমি রয়েছো সঙ্গে। ঋষি ব্যানার্জি বলছি শুনছি, রিকোয়েস্ট দিয়ে রাখলাম শ্রী রাগ গাইতে হবে, চিরঞ্জীব দার ওরে বাবা গলায় রে। আমার বড্ড প্রিয়। তো শ্রীর রিকোয়েস্ট রয়েছে চিরঞ্জীব। ওর শোভন আরেকটা অন্য আহমেদ রিকোয়েস্ট রয়েছে। আছে, সেটা আমি রাখবো। আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে। আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। দেবিন্দর সিং জি তো সবসময় ছিলেন, জয়িতা ভৌমিক। আচ্ছা, জয়িতা বলছেন, এটা আমিও বলতে চাইছিলাম যে তানপুরাটা আর একটু তুমি বাড়িয়ে দিতে পারো গানের সময়, কেমন? আচ্ছা, আমি বাড়িয়েছি, হ্যাঁ হুম, ঠিক আছে আচ্ছা, ঠিক আছে। এবারে কথা শুরুর আগে আরেকটু গান শুনবো। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি একটা গাইছি, যেটা যেহেতু আমি পণ্ডিত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়কে আই ইউজ টু কল হিম দাদু, তো ওনারই একটা কম্পোজিশন। অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এটা গুরু শিষ্য পরম্পরা, মানে আমি একটু শেয়ার করতে চাই যে একটা অসাধারণ সম্পর্ক ছিল আমার সঙ্গে। মানে আই আই ইউ নো লং টাইম এগো, মেবি I have heard Gurjari Tori by some musicians, and I asked him, Dadu, I need a Gurjari Tori compositions. So, oh, okay, so you want to do Tanbaji? Okay, fine, let me think. So he was like this, and he instantly composed one thing, and I would love to share Please that do. wonderful compositions with you all Please, right please. now. Okay.
চিরঞ্জীব দা তোমার তানপুরাটা আরেকটু বাড়াতে পারো, আরেকটু বাড়াতে পারো তানপুরাটা। আরেকটু বাড়াবো? এখন ঠিক আছে? বেড়েছে? না, তুমি কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে নিলে কিন্তু সাউন্ডটা কমে যাচ্ছে। ওই কানে যেটা দিয়ে, হ্যাঁ কানে ইয়ারফোনটা নিতে হবে, আবার মাইক্রোফোনটা মিউট হয়ে গেল। হ্যাঁ, চিরঞ্জীব, কানে ইয়ারফোনটা নিয়ে নাও, ইয়ারফোনটা পরে নাও, নইলে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। ইয়ারফোনটা কানে লাগিয়ে নিতে হবে। চিরঞ্জীব দা শুনতে পাচ্ছি না আমরা। হ্যাঁ, ইয়ারফোনটা কানে লাগিয়ে নাও। तेरो बल प्रताप कर दिखाओ अलाप में राग धरन मुरन सुर संगत के चाल गुरु जाने गुण की सार रस राज गुण निदान गुरु जाने गुण की सार रस राज गुण निदान मद भर गाओ राग ताल सूर चांद में तेरो बल प्रताप कर दिखाओ अलाप में तेरो बल प्रताप कर दिखाओ अलाप में राग धरन मुरन सुर संगत के चाल तेरो बल प्रताप दिखाओ अलाप में तेरो बल प्रताप कर तेरो बल प्रताप कर दिखाओ अलाप में दिखाओ अलाप में दिखाओ अलाप में। চিরঞ্জীব, তোমার সাউন্ডটা কি আরেকটু বাড়ানো যায় কোনোভাবে? আরো বাড়বে? হ্যাঁ, কারণ আমরা যখন সাউন্ড চেক করছিলাম তখন কিন্তু সাউন্ডটা খুব সুন্দর ছিল। একটু যদি বাড়াও, আর তানপুরাটা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না আমি। তানপুরা শুনতে পাচ্ছ না? না, তানপুরার সাউন্ডটা আরেকটু হলে ভালো হয়, আর তোমার মাইক্রোফোনের সাউন্ড যদি একটু বাড়ানো যায়, বাট ইফ দ্যাটস টু মাচ ট্রাবল দেন ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে এয়ারপোর্টটা কিরকম কনফ্লিক্ট করছে একটা মনে হচ্ছে। তুমি এখন কি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। মানে বাড়বে মনে হচ্ছে সাউন্ড? if possible a little bit. তুমি ইয়ারফোনটা নিচ্ছ কেন? তোমার কানে শোনার জন্য? না, এয়ারপোর্টটা নিচ্ছিলাম ইকোটার জন্য। একটা ইকো হচ্ছিল সাউন্ড চেকের সময়, ভীষণ ইকো হচ্ছিল, যেটা ইয়ারপডটা কানে দিলে আর হচ্ছিল না। আচ্ছা, একটা তুমি ওটা কি ব্লুটুথ দিয়ে আছে তোমার ইয়ারফোনটা? হ্যাঁ, এয়ারপোর্টটা ব্লুটুথ দিয়ে আছে। ওটা ক্যান্সেল করে দাও, নরমালে আসো, দেখো ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ব্লুটুথ তো অফ করে দিয়েছি আমি। ব্যাস, তাহলে সুন্দর। এখন ইকো হচ্ছে না তো? ইকো হচ্ছে না? ঠিক আছে। এবার একটু কথা বলি। চিরঞ্জীব, we would like to know about your musical journey. I didn't want to mention it at the introduction because I thought it would be good that you tell us about your gurus, because I know you have learned from different gurus. You have also explored the South Indian style of music. So you'd like to know a little bit about your journey. Please tell us. I know I have met you at Sangeet Research Academy, where you used to go to Arun Jethu's house, isn't it? Yes. And please tell us all about it. Yeah. And that time, what I told you earlier, that না চিরঞ্জীব, একটু সাউন্ড বাড়াও প্লিজ, একটু সাউন্ডটা বাড়াও কোনোভাবে। হ্যাঁ, কথাটা একটু কম আসছে। এখন দেখো, এখনো ঠিক নেই? না, তুমি কি তাহলে ব্লুটুথটা অন করে ইয়ারপডটা নিয়ে দেখো না প্লিজ। তুমি কি অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে আসছো না সরাসরি? হ্যাঁ, অডিও ইন্টারফেস দিয়ে। আমি তো এখানে ভালোই শুনছি।
ना আমাদের এখানে সাউন্ডটা খুব है ना कमलवीर जी, आपको ठीक से सुनाई दे रहा है? You कम need है to ना? boost your microphone level, maybe in the settings. If you go on your sound settings, so just boost the microphone level in your computer. জাস্ট এ সেকেন্ড, একটু জাস্ট ব্যাকগুলো আউটপুটগুলো কাজ করছে তো? কাজ করছে? এটা কি হচ্ছে? উপরে বিল্ট ইন স্পিকার এখন শোনা যাচ্ছে জোরে? অল্প একটু We বেশি। can hear you, but not as loud as we would like to hear you. Or, you know, when you joined us in the beginning, your sound was good. It's only after that, whatever you was using in the beginning, just use that and then let's try the same thing. এখন শোনা যাচ্ছে? We can, but it's not loud enough. अच्छा, आप वो लगा लें हेडफोन और अपना वो जो है फिर से उसको लगा के देखें कैसा आता है your headset, उससे शायद आपका पास आ जाएगा तो possibly अभी at क्या least है? we can hear you. It's not loud, it's अब- too loud. It's not loud enough, চিরঞ্জীব। আমি আরেকটু ভালো পরিষ্কার হলে ভালো হতো, গানটা আরো ভালো শোনা যেত, সেই জন্য। এখনো লাউড নয়, তাই তো? না, not loud enough. তুমি প্রথমে যখন যেটা Kamalveer ji was saying, when you started first, when you joined us, you were, I don't know what you were using, but then towards the last line of your first song, the sound started going a bit off. So if you could just check that. It's everything the same. I don't know what's going on. Hello? Yeah, you know, sometimes what happened when the microphone hear the loud sounds, it automatically put the level down. So it has put the level down and hasn't brought it up again because it's some sort of auto level control. So if you go on your, you know, there, are you using Windows 10? No, Mac. Mac पे हैं आप, okay. तो उसमें अगर provision हो through the speaker I icon. think he has just left. Let him come back again. In the meantime, I think Kamalveer ji, there are loads of comments. I think let me just read it while he is here. প্রণব গুহ ঠাকুরদা বলছেন কিয়া বাত, অসাধারণ, ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। সন্দীপ দা, ভালো লাগছে তুমি আছো। দেখছি আমরা মাইক্রোফোনটা কি করা যায়। হ্যাঁ, কথা বলো তো চিরঞ্জীব একটু। আমি তো কথা বলছি। হ্যালো? হ্যাঁ, it's still not loud enough. What about just removing this mic, and if there is a built-in mic in your Mac, just use that. চিরঞ্জীব দা, তোমার সরাসরি ফোন থেকে সেদিন যেমন করেছিলে না, ওটা করো। না, Just built-in mic. ওই দিনটাও কিন্তু ইয়ে ছিল। এক সেকেন্ড, আমি একবার লাস্ট চেক করে নিচ্ছি। ওই দিনও কিন্তু তাই ছিল, আমার এয়ারপোর্ট পড়তে হয়নি, জাস্ট মানে এমনি নর্মাল করেছিলাম। হ্যাঁ, এখন আমি লাস্ট একটা ট্রাই করছি, আমি একবার দেখে নিই। Take your time. We have enough time on hand, so don't worry. Take your time. আমি এত এটা কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। Everything is fine. আমার দর্শকদের জন্য বলি, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন এরকম সমস্যা কিন্তু আমাদের লাইভে যখন আমরা স্টেজে থাকি তখনও মাঝে মাঝে হয়। তো এটা একটুখানি আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে চেষ্টা করছি, আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। এবার দেখো, এবার কিরকম এসছে? না গো, একই রকম। সন্দীপ দা বলছেন, সন্দীপ বসু মল্লিক দা বলছেন যে প্লিজ গেট ক্লোজার টু দ্য মাইক্রোফোন। চিরঞ্জীব, তুমি কি মাইক্রোফোনের আরেকটু কাছে আসবে? না, যথেষ্টই কাছে আছো। আমি কাছেই আছি, আমি সেটাই কিছুতেই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, কথাটা হঠাৎ করে খুব আস্তে হয়ে গেল, আমি বুঝতে পারছি না কেন। Does your microphone have a switch which have two level of control? Some microphones have two levels of the volume control. Off, then on is first level, and then second switch is the. না, একটাই কন্ট্রোল। এখন কি রকম? Okay, একই control. একই রকম আছে। কিছু করার নেই। আসলে সাউন্ডটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমার একটু মন খুঁতখুত করবে, কারণ এত ভালো গান আমরা শুনতে চাই। সাউন্ডটা যদি ঠিক না থাকে মন ভরবে না, তাই না? হ্যাঁ,
আর একটা অল্টারনেটিভ হলো চিরঞ্জীব দা, তুমি সরাসরি তোমার ফোন বা ল্যাপটপ যেটা থেকে করছো সরাসরি ওটার মাইক্রোফোন ইউজ করে দেখো, অনেক সময় ওটার মাইক্রোফোনও খারাপ হয় না। Okay, if we all mute our microphones and let's see how he sounds. Let's see. কি করছো তুমি? Is there anything wrong here? Did I just fix it? এবার দেখো তো। হ্যাঁ, better. So that's the Chakraborty. There is the echo somewhere. I can hear quite loud and clear. এখন কেমন? ভালো। তোমার আওয়াজ Noise too loud. কিন্তু ভীষণ Too loud. ইটস টু লাউড। ওকে ওকে ওকে। It's fine. আমার গলাটা বন্ধ। না না ঠিক আছে, আমি just বলে দিচ্ছি, করে দিচ্ছি, হয়ে গেছে। But the problem that Chiranjeeb da, এবার দেখো, problem হচ্ছে অনেক echo হচ্ছে। এবার দেখো। ইকো হচ্ছিল, এখনো হচ্ছে ইকো। ইকো হচ্ছে? ভীষণ আমি যখন ভীষণ জোরে আমার ইকো শুনতে পাচ্ছি। আমরা Okay. Let's all of us mute our mics on his own. Let's see how it sounds. কোথায় সেটিংসটা কোথায়? কথা বলো চিরঞ্জীব দা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি আরেকবার করার। এখন কি ইকোটা কমেছে? দেখি ইকো না আমি তোমরা আমরা কথা বললে echo হচ্ছে, ওর কথা বললে echo হচ্ছে না, থাক না, মাইক্রোফোন শুনি। কোনটা? এটা Just give me. না না ওটা কিছু করিস না। It will do echo cancellation. I saw the button. এটা And then audio. না না ওটা তো আমি করলাম, করে এখন এটা ঠিক আছে। না না এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে এখন, ও তো ইয়ে করা আছে। নাও ইটস ওকে। গ্রেট। তো চন্দ্রা শুনতে পাচ্ছ? আমি শুনতে পাচ্ছি। গ্রেট। কোনো ইকো নেই? ইকো আছে, কিন্তু যেটা করব না এখন ইকোটা চলে গেছে। ইয়ে, সো ইউ ডিড ইট। Yeah. It's lots of thing I am also learning. Yeah. খুব ভালো। ঠিক আছে। এবারে বলো। হ্যাঁ, এবারে I told you that about my association with Dadu Pandit Nidant Muddu Banerjee from like more than 32 years, and I have learned from him Drupad, Khyal, Tumri, everything, and he was a genius. And then I got an opportunity to be a student of Pandit Arun Bhaduri through Sangeet Research Academy. And there actually, when I saw you there, that time I was not a student. So I was just going there to listen to the Wednesday concert. recital. Yeah. And then you were a star there. I've seen that recital room was packed, you know. Chandra Chakraborty's recital is like it's hard to get a seat over there. But I honestly, I'm telling you, I want to tell you this to Kamal Birji and Imtiaz Da. And it was like this. And then with Pandit Arun Bhaduri ji, it was like a blessing. So I've never seen such a person, you know. It's like a saint. And it was a long association with him. And he loved me like anything, you know. Sometimes I felt that it's just unconditional love, and I played so many concerts with him, harmonium. ওনার সঙ্গে আমি প্রচুর হারমোনিয়ামে বাজিয়েছি, সঙ্গত করেছি। তারপরে এই করতে করতে আমি যেহেতু ছোটবেলা থেকে আমার ক্লাসিক্যাল গানে ইন্টারেস্টটা এলো অজয় কাকুর গান শুনে, কনসার্ট শুনে। তো সেটা শোনার পর আমি ওই ছায়ার মতো একটা রেকর্ডার নিয়ে ওর পেছনে আমি ঘুরতাম খুব। মানে এরকম কলকাতায় কোনো কনসার্ট ছিল না যেটা I didn't have the recording, you know. So Kaku used to tell me that, okay, I want that recording. You need to give it to me. So this was the relation. And then
he asked me to join to Shruti Nandan as a teacher. So I was the first teacher in Shruti Nandan. So that, the wonderful experience, and I started my talim also from him. So yeah, then I came to London, and I want to tell you one thing, that I had an eye problem in my childhood, and I went to Chennai, and that time my father told me that you need to learn Carnatic music. It's very good, very rhythmic, and if you can get opportunity, then I was in that time I was in London. I was settling down and doing classes and teaching in Bhavan, because Trinity offered me the job for the degree course. So that time, one afternoon, I was having a coffee, and suddenly it's like this, that if I can get any opportunity to learn from Balmunarji, because I've heard his concert in Indo Stadium with duet with Ajay ji and Balmunarji and his solo performance. So, can you hear me properly now? We can. Okay, great. So that time I requested Nandaji, and Nandaji holded my hands and took me to his office. And straight he dialed to Barmunaji that he's a fantastic musician. Sir, he wants to learn from you. And I was like trembling, and he handed the phone, and the voice came from the speaker like, hello, Guruji, voice to jawab nahi, একটা heavenly voice. And তারপর আমার চেন্নাই যাওয়া শুরু হলো, জার্নি স্টার্টেড। I want to tell you one thing, that a musician like him, so famous, and he was like a child. Like, I spent so many times with him, and great memories I have in my mind. So this is my journey, little bit. And now, one guest is sitting behind me, and I'd love to, ask him to sing something for you. Of course. That's what I have been waiting for. Yes. এখানে সরে রাগামালিকা বার করো। সরে যাচ্ছি, দাঁড়ান, তোমরা সব করে দিই। ওর নাম পঞ্চম, সেটা আমরা জানি। ওর ভালো নামটা একটু ওর মুখ থেকেই শুনবো। গানপুরা সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দাও, আর এখানে গল্পটা ভালো শোনা যাবে। Gama pa isa ni da ni pa ma ga ma pa isa ni da ni pa ma ga sa ga ma da pa ni da pa ga ma pa sa ga ma da pa ni da pa ga ma pa isa re ma ga re ni da ma pa ni sa ni sa re ma ga re ni da ma pa ni sa re ni ma da ga ma ga re sa re ni ma da ga ma ga re sa da ma pa sa da ma re pa da re sa da ma pa sa da ma re pa da da ni ma da ga ma sa ga ma da ni sa da ni ma da ga ma sa sa re ga pa sa pa ga re sa re ga sa pa ga re ga ma re sa da ni sa ga
Gama dha gama re dha ni sa 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 re ga dha ma dha ni re sa ni dha ma sa ni ma dha ma re ga re sa dha ni sa 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 re ga dha ma dha ni re sa ni dha ma sa ni ma dha ma re ga re sa dha ni sa 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 re ga re re pa ma pa sa ni pa ga ma re pa re re pa ma pa sa ni pa ga ma re pa ga ma pa ni sa ni da ni pa ma ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa. যা চিরঞ্জীব, এবার Very সমস্ত interesting. ফোকাস তোমার দিক থেকে সরে ওই দিকে চলে যাবে। I was going to say that his name is Pancham, but he has 12 notes in his name. Komal Rishabh, Shuddh Rishabh, Komal Gandhar Shuddh. You have sung everything, so your name should be every note. That was amazing, Pancham. And you did it so easily. All the notes you are singing, It's changing the Shuddh to Komal, Komal to Tivrama. You did it so easily. Yeah, Wonderful. I think he came to Anandodhara's Children's Festival, International Children's Festival, sang beautifully there as well. So, fantastic, Pancham. It's very, very, sort of encouraging to see that you're gonna be. I hope you're gonna beat Baba in very near future. All the very best. Thank you so much. He needs all of your blessings, and just ask him to do the hard work with dedication that he needs to do. Of course, I'm sure. Chiranjeev, I have questions for you. As I was saying that you have 3 gharanas, right? Yeah. So changing from one gharana to other gharana when you were learning, I'm sure it was not easy because each gharana has distinct style of its own. So how did you manage that? How did you change over from Rampur to Gwalior to Patiala? How did that happen? And how did you mix all 3 together in your performance? Brilliant question, I must say. Actually, when I if you ask me, personally, I don't believe in gharana. Gharana was established long time ago. That time there was no communication. कलकत्ता में गवैया क्या कर रहे हैं, लखनऊ का लोग मालूम नहीं पड़ता, तो दिल्ली में क्या हो रहा है उसको भी मालूम नहीं पड़ता, ग्वालियर में क्या हो रहा है, पटियाला में क्या हो रहा है मालूम. And only the meeting place was King's Court. And ये बहुत ही अजीब सा चीज है. देखिए, हमारा जो उस्ताद और पंडित थे, एट दैट टाइम देयर वाज नो एजुकेशन, एंड मोस्ट ऑफ द उस्ताद एंड पंडित वर वेरी सुपरस्टिशियस. एंड वो ये जो घराना, मतलब मेरे समझ में जो आया है, इट्स लाइक ए schooling system, like a system that, and when I studied with Dadu, and that time I didn't have that maturity to recognize that this is Rampur or this is Gwalior. Whatever Dadu used to taught me, I was learning that. And still, actually, when I joined Sangeet Research Academy, that time I got unique opportunity to listen to all the ustad and pandits, And at that time, as you know, that there was no YouTube and recording and cassettes. It's very hard to find. And जो लोग के पास थे recording, वो लोग ऐसे कलर ऊंची हाई करके बोलते थे, मेरा पास 100 hours का गुलाम अली खान साहब का रिकॉर्डिंग है, मेरा पास ये है. तो ये सब खजाना चीज था. तो अभी का डेट में जो मैं समझता हूँ, क्या मेरे को इतना ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ है. एक्चुअली व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई नीड टू prepare, I need to present my own gaiki, own system. So because if I try to copy somebody, people will not listen to me. So
ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड स्पेशली मेरा नजर था कंपोजिशंस के ऊपर. लाइक I used to argue with my friends, some of my musical friends, how many बेहक का composition मालूम है तेरे को, ईमन का कितना बंदिश मालूम है, मालकोस का कितने कौन सी ताल में compositions मालूम है. तो ये सब चीज था. I didn't concentrate about the घराना. जो तरीका मेरे को पसंद आया तो उसको मैं हासिल करने की कोशिश की. ऐसा ही मेरे ऐसा ही हुआ है. अब मेरे को अभी तक मालूम नहीं है मेरा कोई गायकी बना कि नहीं. एंड एक्चुअली आई डोंट केयर. मैं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, मैं थोड़ा सुर में गाऊं, वही बस ठीक है. Thank you. Kamalveer ji, I know you have questions. Imtiaz da, I know you have loads maybe. But I have couple, if I may just ask him first. And then I'll give you the opportunity to talk to him, okay? So tell me, you, Kolkata So mein mahol hai. unfair. কলকাতা में एक মাহौल है, রাইট চিরঞ্জীব, যেখানে আমরা জানি সবাই গান করছেন, আমাদের একাডেমিতে এত বড় বড় ওস্তাদরা আসছেন, রেওয়াজ হচ্ছে. তো আমরা যেমন আমার ক্ষেত্রেও দেখেছি, when we moved out of India, so वो माहौल नहीं है, उतना रियाज का, उतने उस्तादों को सुनने का मौका हम लोगों को नहीं मिलता है. स्पेशली यू बीइंग अ मैन, সো পিপল সে দ্যাট তোমাকে তো ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে কি ডাক্তার হতে হবে, সো তুমি গানটাকেই বেছে নিয়েছো প্রফেশন হিসেবে, দ্যাট টু ইউ কন্টিনিউড আউটসাইড ইন্ডিয়া. নাও I can understand if you are a musician, if you are accompanying somebody, tabla player or sitar player, then it's okay, then it's a different ball game altogether. But being a vocalist, I don't think it's very easy as a vocalist to continue with your riyaz, with your sadhana, with everything in abroad, outside India. So tell us about it. How difficult or how easy was it? It's can you hear me now clear? We can, yeah. Okay, that's brilliant. So it's not that it was not my choice actually. I started in Goenka College of Commerce. I was a student of commerce, but actually it started from my school. Teacher जो पढ़ाने के लिए आते थे, वो क्लास में मेरा गाना सुनते थे. तो ऐसे ही लाइक ये जो फायर मेरा मन में था, क्या ये गाना ये एकदम मेरे को पूरा मेरा जिंदगी ले लिया. तो मैंने जब कॉलेज में भी गई तो उधर भी जो दोस्त लोग थे सब कुछ वो मेरा गाना सुनते थे, और मैं कॉलेज का फेस्ट में हिस्सा लेता था. तो फास्ट सेकंड मिल जाता था ऐसे. एंड बट दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस अबाउट क्लासिकल म्यूजिक. बट टू बी ऑनेस्ट मेरा आइडियल था किशोर कुमार. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. और मैं एक छोटा कहानी में बताना चाहता हूँ. एक I think Chandra, you remember there was a shop in Esplanade, a very famous musical shop, Harry's Music House. There is a shop, and one day my dad came from his office and he told me that I won a lottery. I picked up 3 discs for you, and there is a lottery, and this is the thing. तो मैंने बोला क्या record लेके आया है? I think around like late 80s, like 84, 85 or something like that. So तो बोला एक jazz का एक record ले आया, which I liked very much. Neil Diamond, the jazz singer. Another one was Jyotirindranath Thakur's Brahmo Sangeet, something Upashanar Gan, 1 disc. And another one, एक इंसान तानपुरा लेके ऐसे बैठे हैं, उस्ताद आमिर खान. तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया. मैंने पिताजी को बोला, अरे क्या ये कौन सुनेगा इसको, आ करते हैं कि कौन सुनेगा इसको. तो मैंने बोला, अरे इडियट, उस्ताद आमिर खान, इसको सुन. तो आई स्टिल रिमेम्बर द डे. एंड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स मेरा पूरा लाइफ का डेफिनेशन बदल हो गया, पूरा चेंज हो गया. वो जो डिस्क था मेरा पिताजी लेके आए, वो बिलासखानी टोडी और आभोगी का एक लॉन्ग प्लेइंग डिस्क था. वो मैंने कितना दफा सुना है पूछो मत, ऐसा था. तो देन द जर्नी व्हाट आई एम गोइंग टू आंसर यू दैट मेरा कोई चॉइस नहीं था. मेरा जिंदगी का ऐसा टनल जैसा हो गया है क्या, म्यूजिक का सिवा और कुछ मेरे को दिखाई नहीं दिया.
तो when I came to London, so मैंने फर्स्ट दिन से मैंने मेरा अंतर में एक चीज था, क्या मैं गाना गाऊंगा जैसा भी हो मैं. And I was very much strict actually in my beginning days. I didn't like fusion. मैंने ख्याल गाऊंगा और मैं रियाज करूंगा. तो ये मेरा एम था. अभी भी ऐसा ही है. अभी भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया हूँ. क्या बहुत सारे ऑफर आते हैं फ्यूजन करने की, डायरेक्शन देने की. और तो मेरा पहला दिन से जो था मेरा मन में, क्या मैं गाना गाऊं, जो वो बुरा भी हो, आई डोंट केयर, बट आई विल सिंग. থ্যাংক ইউ। এবার একটু গান শুনি, তারপর আমি কমল বীরজি আর ইমতিয়াজ দাকে বলবো তোমার সাথে কথা বলতে। নিশ্চয়ই. Now I want to sing both of our very favorite rag Maru Behag, and because this is Guru Shishya Parampara, so this composition composed by Pandit Arun Bhaduri ji, and rag Maru Behag tal 3 tal. I'm just trying, need all of your blessings. Na re no na re na re no re no re no जग मोरी भागे एरी आज, जग मोरी भागे एरी आज, अब घर आए प्रीतम प्यारे, अब घर आए प्रीतम प्यारे। जग मोरी भागे एरी आज, जग मोरी भागे एरी आज, सब सखियन मिल मंगल गाऊं, सब सखियन मिल मंगल गाऊं, गरबा लगाऊं करिहूं सिंगार, गरबा लगाऊं करिहूं सिंगार। जग मोरी भागे एरी आज, जग जागे
Mori, jage mori, jage mori, bhage, aaj jage mori bhage, heri aaj jage mori bhage. Jage mori bhage, jage mori bhage, jage mori bhage, heri aaj jage mori bhage, aaj jage mori, jage mori, jage mori bhage, jage mori bhage, jage mori bhage. Excellent, amazing, amazing. Thank you so much, Harjot, Chiranjeeb. খুব ভালো লাগলো দাদা। Yeah, Kamal Virji, would you like to ask him anything before I start again? So Chandra Ji, I've you're not asked allowed me, to ask first any of more all, questions. he sang it so beautifully. That's the main thing. So just say he was saying about the gharanas that he don't follow any gharana and he don't care about gharanas. So I would like to just go back onto that. I think what happened in the past, as he said very nicely, that we were actually divided. We didn't have any provision of listening to each other very easily. It was later radio emerged as we could hear the other gharanas. Pehle, people were staying far away from each other, so the music was in the pockets. So obviously, like you speak Bengali, your accent will be like that. Even if when you speak Hindi, I speak Punjabi, so even when I speak Hindi, maybe I'll have a bit of Punjabi tone. So this is what gharanas are all about. That is a regional effect. Gharana have a regional effect. And also what happens in my opinion, when you stick to a gharana, when you strictly learn from one guru, your style become more or less same as your guru. So you are actually become a copycat of your guru, which which can be good thing, which can be a little bit of your individuality don't come out. But nowadays we have the facilities of listening to everything through TV, through YouTube, all the social media. So we have the capacity to hear all kind of same rag in different ways. Different people sing different ways. So by doing that, I think we adopt our own individuality. We begin to see the difference, and when we are trying to sing, it becomes a mixture of everything, and that mixture becomes our individuality. And that's what I was listening in his singing, that he didn't resemble any gharana, and it was his own style, which I appreciated. And I agree with him that don't strictly follow one gharana, because you become a copycat. I know a lot of people who belong to gharana wouldn't like my statement or his statement, but this is the way. I think we have more opportunities now to adopt to our own styles. Before we didn't Absolutely, have. Kamal Virji. And that is why at Sangeet Research Academy, as scholars, we were asked to go to all other gurus as well, to learn from them. This was the idea. That's right. आप एक घराने पे स्टिक हो जाओगे तो वही आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा. So why not try and then try to form your own style, which Chiranjeeb was also saying. Chiranjeeb, এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্টস রয়েছে, আমি একটু পড়ে দিই. ঋষি ব্যানার্জি বলছে ভীষণ সুন্দর, দদু লেয়ার সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন বাংলাদেশ থেকে, বলছেন ভেরি নাইস. Pia Mainin বলছে excellent program. Thank you to all. Please come to Shurbandhan's event where we will discuss more about the very interesting tradition of Gharana that you touched on. Chiranjeeb Chakraborty will be there. নিশ্চয়ই পিয়া, আমি আশা করব আমাদের দর্শক যারা আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন নিশ্চয়ই আপনার সব অনুষ্ঠানেও যাবেন এবং চিরঞ্জীবের সঙ্গে আবারও দেখা হবে তাদের.
সঙ্গে রয়েছে রাধিকা দত্তা, বলছেন খুব সুন্দর। জয়দীপ্ত দে, অ্যাড্রিয়ানা স্টুপু, দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়, কিরণ পাল সিং, পারভিন রানী, জয়িতা ভৌমিক, প্রণব গুহ ঠাকুরদা, অনেকে রয়েছেন তোমার গান শুনছেন। এদেশে তুমি গান শেখাচ্ছ চিরঞ্জীব, অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী তোমার কাছে শেখে। এবং আমি যেটা জানি আমার অভিজ্ঞতা থেকে, আমরা যখন দেশে গান শিখতাম, একটাই রাগ 1 বছর 1.5 বছর ধরে গুরুজি শেখাবেন, কিচ্ছু বলা যাবে না, মানে বুক ফেটে যাচ্ছে অন্য আরেকটা রাগ শিখবো, আরো কয়েকটা বন্দিশ শিখবো অন্য রাগের, বাট উই কুড নট সে এনিথিং। বাট থিংস আর ডিফারেন্ট হিয়ার. So if I try to teach one raga for 2 years to one of my students, I don't think how it's going to go. Probably it's not going to go very well. So what are your experience here teaching in this country? That is I love first of all, thank you so much. This is the question actually. We are in London or maybe we are in Europe. We are trying to showcase our Indian art and culture, and this is, for me actually, this is not a problem. My mind completely set up differently, because I don't think that whatever we used to do in India, I need to follow here. So here I do the opposite thing. I teach all the ragas and compositions, but I myself, I practice one raga. So just complete opposite things I do. আমি খুব মানে মজা করতে ভালোবাসি, এটা খুব মজা করে উত্তর দিলাম। ব্যাপারটা ফর মি অ্যাকচুয়ালি the thing is, I try to teach them the technique, because compositions, raga, everything, if anybody practice dedicatedly, and if they do hard work, they can learn all the ragas, all the compositions, because now it's very easily available. This is not the scene when we started our journey 30 years ago, 40 years ago, but now everything is available in your fingertips. So my point, I try to teach them the technique, how to sing. Whatever you do, maybe you are a Bollywood singer, maybe you are a folk singer, maybe you want to do classical, maybe you want to do bhajan, but आप वो बर्तन साफ करो, उसके बाद आप whatever the dish, बिरयानी लगाओ क्या, सुक्तो लगाओ क्या, कबाब करो, कुछ भी करो, बासन, you need to wash your dishes. So my job is to give the instruction how to wash the dishes so that they can cook any sort of things. Very good. That's a very good tip. Imtiaz da, before we move on to the next music, what is your question? See, this is called very much, what do you call it? No, I don't have any time to even ask you any questions, Chiranjeeb. Let's go for your next music, and then I'll ask some questions. Definitely. Again, I don't want to lose the opportunity. I'm asking my son to sing compositions. Again, this composition he will be singing based in Rag Khamaj, composed by my Guruji Pandit, late Pandit Nidan Bandhu Bandyopadhyay. It's a very good composition actually. It's a Lakshan Geet, जो खमाज ग्रामर जो है वो पोएट्री का आधारित है पूरा. तो hope you will enjoy. Rag Bandhu. Just a second. Manohara Muni Sabagavata Raga Manohara Muni Sabagavata Nisa Gama Pada Nisa Arohi Manata Sanidapa Magarisa Abarohi Janata Raga Manohara Sabagavata Kandarvadi Nisaya Samavadi Janata Kandarvadi Nisaya Samavadi Janata
Sampurana Parasava Bhavata Dusarika Kareyava Kambajigavata Dusarika Hareyava Kambajigavata Raga Manohara Munisa Bhagavata Kamapada Nisa Nisa Sanida Pamagarisa Raga Manohara Kama Nohara Kamapada Nisa Nisa Sanida Pamagarisa Raga Manohara Kamapada Nisa Gari Magarisa Nisa Dani Raga Manohara Kaman Nisadama Pagamani Dani Manohara Nisi Raga Manohara Nisadama Pagamani Dani Padani Nisa Raga Manohara Munisa Bhagavata Sagare Maga Kama Pani Dani Pada Nisa Sagare Maga Nisari Nisa Dani Pada Nisa Sani Sanida Pamaga Nidani Pada Ni Sanida Pamaraga Manohara Munisa Bhagavata. Wow, very, very nice. ভীষণ ভীষণ ভালো। Excellent. Excellent. Definitely. Yes, pretty good. Very good. I'm sure you'll be doing much better than that very soon. I thought you know earlier than what I was predicting earlier. Very good. Well done, করো Pancho. ওকে যাতে ও ঠিক করে করে ব্যাস And it was fantastic. Fantastic. Now, finally, now I got a little bit of chance of asking you any questions. So I'll ask about 10 questions. Wow. Right. Don't worry. Don't worry. I was listening to your answer about this gharana, that how if you belong to one gharana, it can make you a little bit sort of stereotype, and it may not sort of bring out the best out of any singer. But there is argument against it, saying if you practice one style and you know in depth, and then you probably get more out of it because you can then express your feelings in a certain way much better. So that is that argument. I'm not going into that debate. However, you have got a unique sort of journey of music, Chiranjeeb, because you also learned Karnataka music, and also you learned Hindustani music, and that is quite interesting for me to know as from your point of view, because you had exposure to both music, and how did that enrich your own gaiki and your own style? And when do you, and that's for number one question, 2 in 1, I told you. And the other question is, when you're practicing, how do you practice your vocal practice? Do you follow the, sort of Southern or Carnatic style or Hindustani style? And 3, what kind of sort of differences that you could tell us as a vocalist, right? What do you feel in terms of these two styles of the Indian tradition? Great questions. First of all, the comments about gharana, that was completely my interpretation and my imagination, or what I feel about gharana. So of course some people can argue, and I really appreciate that. And for me, actually, I didn't want to learn that intricate Carnatic things. Actually, I went to learn from Balmurari ji because of Balmurari Krishna, his voice, and his unique Tillana compositions. What I have learned from him, and maybe it will sounded little bit philosophical, but in my life, actually, I learned music from my life. Personally, I don't believe that I need to go to him to learn something. Actually, if I spend some time with him, with some great master, or in any field, the great personality or anything, maybe with an actor, maybe with a painter, maybe with a sculptor, that
just go there and sit and try to absorb uh, positive vibes from any person, and speak less, and just take rest from his feet. That is my imagination, or that is my realization. So when I went to learn Balmurari ji, he asked me, what do you want to learn? I don't know, Guruji, whatever you think suitable for me, you just teach me. Or one day, when he came to London, we spent a fantastic time, and nothing, we are having coffee, we are gossiping, we are arguing about, because he was very fond of betting, so we are arguing with this, and different kind of stories, and different kind of composition, this sort of things. So this was my journey with him. And you know and also it happened too with my guruji, Pandit Arun Bhaduri ji. Sometimes I used to go to SRA in the evening. Most of the evening he didn't take any lesson. He used to do his own रियाज. So मैं उधर जाता था, वो रियाज कर रहे थे पुरिया कल्याण, मैं उधर जाके बैठ गया. तो कोई कोई बात नहीं हो रहा है. 1.5 hour, 2 hours he is practicing. He was practicing. Sometimes what he used to do, वो हारमोनियम थोड़ा मेरा पास दे देते थे, थोड़ा बजा मेरा साथ, तो मैं बजा रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रहा है. तो ये, और जो सेकेंड जो क्वेश्चन जो आपने पूछा है, I loved your questions. Actually, when I practice, sometimes I practice a Bollywood song, and मैं उससे मैं क्या मेरा नजर कैसा जा रहा है उसका कंपोजिशंस के ऊपर, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है, क्या है. So I want to give you some to my music actually. Can you hear me? Yes. Yeah, we can hear. Please do. Please do. I kept my microphone off just because of the echo, but that's fantastic. আমি Yeah. চাইছি একটা Carry on. জিনিস, ওকে আমি হ্যাঁ, দেখাচ্ছি দেখি। যে আমি চিন্তা ভাবনাটা এরম ভাবে করি কিনা. গান পুরোটা একটু কমিয়ে দিতে পারো। আমরা কমিয়ে দেবো, দিচ্ছি. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवाल से
परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, ओ मुस्कुराए मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे, ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हुए, हो हैरान हुए. Amazing. So, That's brilliant. so these are my inspirations actually. ऐसा नहीं है कि मेरे को ईमानी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या भूपाली प्रैक्टिस करना चाहिए. मैं ये गाना के लेकर I can sing 15-20 minutes and this is the inspiration I always get from any compositions actually. বিউটিফুল। আচ্ছা, তোমার কাছে কিন্তু শ্রীর রিকোয়েস্ট আছে ঋষির, এটা ভুলে যেও না। আর সেটার জায়গা থেকে এবার আই এম জাস্ট জাম্পিং টু অ্যানাদার কোনো অসুবিধা নেই, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট. সো এটা ঋষি আই নো রিকোয়েস্ট করেছে তোর জন্য একটা গান যেটা ওর ভালো লাগবে, সেটা আমি একটা গাইছি. এই গানটা আমি শিখেছিলাম ডক্টর উৎপলা গোস্বামীর কাছে যখন আমি রবীন্দ্রভারতীতে পড়তাম. নীলুবাবুর টপ্পা আমি একটুখানি চেষ্টা করছি গাওয়ার. সে বিনে যাত না দুঃখ বল জানাইব কারে, অন্তরের দুঃখ যত রহিল মম অন্তরে, সে বিনে যাত না দুঃখ বল জানাইব কারে, সে আমার আখির অঞ্জন, ওগো আমি তার মনোরঞ্জন, ও সে আমার আখির অঞ্জন, ওগো আমি তার মনোরঞ্জন, করে গেছে নিরঞ্জন অঞ্জন দিয়ে আমারে, সে বিনে যাত না দুঃখ বল জানাইব কারে. বাহ, ভীষণ ভীষণ ভালো চিরঞ্জিত। আমি একটু পড়ে দিই, আরো কিছু কমেন্টস আছে। অনেক দর্শক সারা পৃথিবী থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আজকে চিরঞ্জীবের গান শুনছেন। তবে আমার মনে হচ্ছে চিরঞ্জীবের থেকেও সবার কিন্তু, তুমি জানো চিরঞ্জীব আমি কি বলতে চাইছি, কিছু মনে করো না ভাই, কিন্তু এর থেকে বড় কিন্তু একটু শিফট হয়ে গেছে আজকে, কিচ্ছু করার নেই। এর থেকে বড় আনন্দের আর কি হতে পারে? ও হি ইজ ভেরি হ্যাপি যে all are he's getting all the praise and getting all the blessings, that is actually he needs. So definitely he will be coming little bit later at the end, because the last song उनको थोड़ा वैरवी का एक भजन मैं बोला है मेरे को, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি একটু পড়ে দিই। সন্দীপদা বলছেন টপ্পাটা ভালো হয়েছে।
রিক্তা মুখার্জি, আহা দারুণ। পুষ্পিতা গুপ্ত লিখছে আহা হা হা হা, অনেকগুলো আহা হা হা রয়েছে পুষ্পিতার কমেন্টে, তো আমি একটু ছোট করে দিলাম সেটা। পিয়া মায়ানিন তো অনেকক্ষণ থেকেই সঙ্গে রয়েছেন, সঙ্গীতা দত্ত রয়েছেন সঙ্গে, দিব্যা মিশ্রা আর রয়েছেন। সকলকে আমার নমস্কার সকলকে। You know, I'm so grateful. All of you are watching. I need all of your blessings, love, and yes. রত্না ঘোষ, লোপা জি এম, আরো অনেকেই রয়েছেন যারা, শর্মিষ্ঠা গুহ রয়েছেন, গান শুনছেন। রমনিক ভারু বলছেন আই এগ্রি উইথ কামলবীর জি, টেক বেস্ট অফ দ্য ইচ ঘরানা অ্যান্ড সিং অর প্লে অ্যান্ড এনজয় আওয়ার ক্লাসিক্যাল মিউজিক। সবাই অনেক মন দিয়ে অনেক ভালোবেসে অনুষ্ঠান দেখছেন, এটা আমার জন্য এবং কলাকারের জন্যও খুব আনন্দের খবর যে আপনারা সবাই সঙ্গে রয়েছেন, চিরঞ্জীবের গান শুনছেন, পঞ্চমকে আশীর্বাদ করছেন, পঞ্চমের গান শুনে খুশি হচ্ছেন। আচ্ছা চিরঞ্জীব, এবারে অনেক অন্য গান তো হলো, আমরা কর্ণাটিক স্টাইল নিয়ে কথা বললাম, ঘরানা নিয়ে কিছু কথা হলো, তো এবারে যদি একটুখানি তোমাকে বলি যে মান্না দে। একদম বেছে রেখে দিয়েছি আমি, তার কারণ হচ্ছে আমি জানি তোমার বাংলা গান নিয়ে একদম অনেক ভালোবাসা তোমার বাংলা গানের তার প্রতি। কারণটা হচ্ছে, তার কারণটা একটা কারণ আছে, কারণটা সেটা হচ্ছে, এক সেকেন্ড, যে कमलवीर जी, आपको पता है बीच बीच में हम लोग बंगाली में बात करते हैं, और आप तो आधा बंगाली बन ही चुके हैं अभी। Especially, I have chosen this song because we lost a great artist, you know, within 2 weeks. এবং one of my favorite, Soumitra Chattopadhyay. And, you know, I'm so fortunate, I'm so lucky that I want to share this. He came here in 2005 for a tour of Shesher Kobita, and one of my very good friend, Dr. Amit Ranjan Bishwas, he written the script and I did the music. Actually, not only the music, actually I played the keyboard. I compute all the music in my keyboard and I toured with him, and that was a great experience for me, you know. And I've seen इतना नजदीक से मैंने उनको स्टडी की, अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या क्या बात है। तो my a very humble tribute to his feet, and this is a great composition. I think I'm not telling you what is it, and all of you know this composition. मन्ना दे साहब को आपने भी सुना होगा कमलवीर जी कई बार, तो ही इज वन ऑफ आवर ऑल टाइम फेवरेट सिंगर्स। तो चिरंजीव बहुत ही अच्छा गाता है, उनके जो गाने बंगाली गाने हैं, यू हियर हिम यू विल नो व्हाट आई मीन। Okay, yeah, yes. Waiting for him to sing now. Yeah. হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াই যদি কখনো একান্তে, চেয়েছি তোমায় জানতে, শুরু থেকে শেষ প্রান্তে ছুটে ছুটে গেছি তাই। আমি যে নিজেই মত, জানি না তোমার শর্ত, আমি যে নিজেই মত, জানি না তোমার শর্ত, যদি বা ঘটে অনর্থ তবুও তোমায় চাই। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি
তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াই। আমি যে দুরন্ত, দু চোখে অনন্ত, ঝড়ের দিগন্ত জুড়েই স্বপ্ন ছড়াই। তুমি তো বলনি মন্দ, তবে কেন প্রতিবন্ধ? রেখো না মনের দ্বন্দ্ব, সব ছেড়ে চলো যাই। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াই। বাহ, Wow. that's one of the most popular Bengali numbers, Kamal Birji. Wow, wow, wow. Certainly a very, very good. And you sang it so good as well. I tried. Just the click track, you did so well. চিরঞ্জীব, তোমাকে যদি বলি আমি যে এই যে তোমার মিউজিক্যাল জার্নি, এত কলকাতা থেকে এসে তুমি এখানে এসেছো, তুমি ছাত্রদের শেখাচ্ছ, নিজে রেওয়াজ করছো, তো ছাত্রদের মধ্যে এদেশের ছাত্রছাত্রীরা, যেটা আমারও অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়, এখন আমি রিসেন্টলি গান শেখানো শুরু করেছি বলে, তো ছাত্রদের শেখাতে গিয়ে তুমি কি দেখছো, কতটা ডেডিকেশন দেখছো এদেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে? দেখো, একটা কথা আমি বলি, যারা যারা করছে, আর আমি না, মানে আমি সত্যি কথা বলছি, আমি খুব লাকি। আমি যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আমার কাছে শিখছে, ওরা এত ভালো, দে আর সো গুড অ্যান্ড ডেডিকেটেড, যে আমাকে নিজে থেকে কিছু বলতে হয় না যে রেয়াজ করো। দে ক্যান ফিল যে রেয়াজ করতে হবে, এবং রেয়াজ করাটা দরকার এইভাবে। এবং তারা মানুষ হিসেবেও খুব ভালো। প্রথম থেকেই আমি এরকম একটা সারাউন্ডিংস পেয়েছি যে তারা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। দে লাভ মি লাইক এনিথিং, অ্যান্ড they they are into different profession, you know. You can't ask any doctor to do riyaj for 7-8 hours. No, it's not possible, but still they do. And খুবই ভালো কয়েকজন ভালো গাইছে, তুমি তো চেনোই অনেককে, এবং চেষ্টা করছে তাদের মতো। সেটাই আমার মনে হয় এরকম একটা, আর এখন যা সিচুয়েশন যাচ্ছে তার মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকাটাই একটা, মানে ইটস ভেরি হার্ড টু সার্ভাইভ, and still they are practicing, and they are continuing their lesson with me. This is a very great job, I think. তা আমরা যেটা ভাবতাম that we are abroad, there is no mahol, but nowadays what I have started feeling, Kamal Viji, you may agree with me, that we have managed, all of us together, we have managed to create a mahol in London as well. এখানে চিরঞ্জীব রয়েছে, ইমতিয়াজদা রয়েছেন, আরো অনেকে রয়েছে, সঞ্জয় রয়েছে, ঋষি রয়েছে, আরো অনেকেই ভালো গান গাইছে। They are trying to teach, they are trying to create an ambience, and I think that's a very good thing, that's a very positive thing to look for. Definitely, I completely agree with you. Actually, the you know, what the problem is, we always compare, you know, India में ऐसा था, इधर नहीं है. Don't compare. Whatever you are getting, just उसको एकदम positively लो, and try to appreciate everybody. Nowadays, you know, एक point मैं बोलना चाहता हूँ, कोई किसी को appreciate नहीं करता है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा गाना हो रहा है, अच्छा रियाज हो रहा है, गाना बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसमें क्या होता है, और एक सोल और एक ह्यूमन बीइंग, they get charged, they get inspired, and automatically that person, उसका अंदर से आपका ऊपर से दया आ जाता है। You know, you can get a you know, blessings from a smile, actually. People need to remember these things. Okay, so we are in the last part, I think. So I am now asking Pancham to sing a Bhairavi bhajan, then I'll be singing 2 minutes one Bhairavi dadra. না 2.5 minutes তো গাইতে পারো, অসুবিধা নেই। Thank you. চলো, হারি হারি বার করো, বার করো।
Hari 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 Sumiran Karo, Hari 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 Sumiran Karo, Hari Charana Ravinda Taro, Hari Charana Ravinda Taro, Hari 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 Sumiran Karo, Hari 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 Sumiran Karo, Hari ki kata beja beja, Hari ki kata beja beja, Ganga chaliya veta, Ganga chaliya veta, Hari 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 Sumiran Karo, 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 Jamuna Sindhu Saraswati Ave, Jamuna Sindhu Saraswati Ave, Godavari Ilan Balalawe, Sarabati Takoba Sadaha, Sarabati Takoba Sadaha, Surahari Kata Bejaha, Surahari Kata Bejaha, Hari 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 Sumiran Karo, Hari 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 Sumiran Karo, Hari 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 Sumiran Karo, Hari 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 Sumiran Karo. আমি ভাবছিলাম তুমি বোধহয় এর সঙ্গেই তোমার যেটা বলছিলে Rasili Kore, Rasili Kore, Nana dekhe Jialal Jai, Jialal Jai Mora, Man lal Jai, Jialal Jai, Jai, Jaya, Jialal Jai. उन जो बन पर
व्याकुल जाऊं उन जो बन पर व्याकुल जाऊं तोरी सुरतिया तोरी सुरतिया मन लग जाए रसली को रे जिया लग जाए जिया लग जाए जिया लग जाए Wow. Wow. Beautiful. Yeah. Very, very nice. Very good. Thank you so much. থ্যাংক ইউ চিরঞ্জীব। একটা ছোট্ট কমেন্ট পড়ে দিই। দদু লেয়ার বলছেন ভজনে মজে গেলাম পঞ্চম, আশিস রইল, ভালো করে চর্চা করো। চিরঞ্জীব দা বেশ ভালো লাগলো, ধন্যবাদ, নমস্কার। চিরঞ্জীব, তোমার গানের অনেক কমেন্টস তো আছেই, তবে সত্যি কথা বলতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে যে পঞ্চমের গান শুনে সবাই এত খুশি হয়েছেন আজকে। গুরুজি থাকলেও ভীষণ খুশি হতেন ওকে দেখে। যখন তুমি আমায় বলেছিলে যে ও একটু গাক, গুরুজি বাচ্চাদের ভালোবাসতেন, তো সেটা ওর কাছে একটা বড় পাওয়া। এবং যে কেউ আদর করে গান গাইতে বলছে, এর থেকে বড় আশীর্বাদ তো কিছু হতে পারে না। এবং এইগুলোই ওর যখন বড় হবে মনে থাকবে যে ও গান করেছিল এবং সকলের আশীর্বাদ পেয়েছে, এবং সেই জার্নিটাকে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাই। নিশ্চয়ই পারবে, নিশ্চয়ই ভালোভাবে পারবে। Kamalvirji, what I was saying is that we have now managed to create a great ambience in UK where we have Definitely. musicians and supporters, music lovers like yourself. So during the COVID has actually taught me a lot of things that, you never know what's going to happen tomorrow. I So know. while we are all here and we have our music, let us all work together. Let us do our music together so that one day people in India feel jealous. That look at the mahal they created in London. That would be wonderful, That's isn't true. it? That's true. Unique I mean, idea. people don't realize that the musicians who settled in this country are of very highest quality, very highest standard. Like we have seen in the past, if a musician come from India, everybody want to listen to that musician, and they think, oh, better musician has come. And when musicians settle in England goes, nobody come to listen. Oh, it's just a local. But people are not realizing that much better musicians are here actually than many of the people who come from India, Pakistan, and perform here and take so much credit, and not even good musicians do that. But we are lucky that we have so many good musicians here. Chiranjeeb, you are so good. I need your blessings. Thank you. I think I kind of echo that in a different way, because as you know, I'm kind of quite strict in that sense of how the music should be, taken seriously, not as a matter of entertainment only. And that is very important to understand, amongst all the other things that Chiranjeeb and Chandra you said, that we would encourage people to do music, and that is also a part of life. And obviously, we have our stress, and music is very, is kind of a medicine from that point of view, and we all get that. But at the same time, I think as a musician, as a teacher, I think we all have our kind of aspire, shall I say, that we shouldn't settle to a second class music production here. We should aim for higher. And when you call that we are the sort of torchbearer of different genres of Indian music, we should at least have the aspirations to do more, especially when Pancham, he showed us how beautifully he performed today, and what kind of potentials of these young kids who are actually born and brought up here, but would be doing, I think, immense proud to the whole world, not to the UK only, if you see what I mean. So that is the vision I think we should also have back of our mind.
having said all those things that we just said, that we, sort of, so I think that is also very important, not to forget that we can do better. We can do better than some of the peoples in India, and also our young kids can do better. I mean, that is really important for us to, sort of aspire to. And when you're creating the mahal, we shouldn't stop here. We should aim higher and higher and higher. Of course, and that's what it proves, that the younger generation born and brought up in this country are also being trained by groomed, like, as Chiranjeeb said, that he teaches a lot. I have started teaching recently, and I see there are really amazing talents. The kids, they sing so well, they sing so good. One other thing, sorry, Chandra, one other thing that I would... Shatarupa ছেলে মাত্র 5 বছর বয়স, he sings in such a tune. অবাক লাগে দেখলে যে এত ছোট্ট বাচ্চা এদেশে জন্মেছে, বড় হয়েছে, এত ভালো খেয়াল গাইছে। Yeah, but one other thing, Chiranjeeb, that before I forget, because one important thing that we are blessed here in London, especially, and also in UK, that this is a multicultural society, and we have the cream of most of the other cultures, other musicians here, and exposure to it. So therefore, we have much more chance of bringing up young kids, young generations with much more music potentialities, and it is our duty, absolutely, that to make sure that we groom them properly and make them right for the upcoming future. And I think future is bright for the kids even here, if they want to take music seriously. Yeah, I mean, there are a couple of British-based musicians which have proved that already, like Rupa, we all know how beautiful sitar she plays. Kripal, who plays Dilruba. There are few musicians who are born in this country and playing as good as anybody in India. So we do have our duty is to playing jazz, and she's a famous pianist, but she has got a background of sort of Bengali music. So it also all of these helps. So no matter whatever COVID has done for us, but the future certainly looks very bright as far as the music world is concerned. Thank you so much, Chiranjeeb. Thank you. বাবা, তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা, অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদ। তুমি আরো অনেক ভালো গান গাইবে, এবং একদিন কালাকারে আমি শুধু তোমাকে নিয়ে কাজ করব। বাবা থাকবে না সঙ্গে, ঠিক আছে? শুধু তুমি গাইবে সেদিন। খুব ভালো লাগলো চিরঞ্জীব, অনেকদিন পরে ভার্চুয়ালি দেখা হলো। আশা করব খুব শিগগিরই তাড়াতাড়ি দেখা হবে, সঙ্গে দেখা হবে। হ্যাঁ, একটা জিনিস শেষ করার আগে একটা জিনিস বলতে চাই, তোমার পাঞ্জাবের সঙ্গে আমার পাঞ্জাবিটা মিলে গেল কেমন করে আমি জানি না। মিলে, কারেক্ট। And also, I mean, I think we'll be doing, much more programs together, and nice seeing you all here. And Pancham, you did so well. I'm so proud of you. Thank you. Pancham, So sweet. Pancham, you are the highlight of today. Thank you, Kamalbirji, for being with us. Kamalbirji, thank you. Again, thank you for inviting me. Yazda, thank you so much. ভালো থেকো চিরঞ্জীব, খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে। নিশ্চয়ই। Namaskar. To all our viewers, thank you once again for joining us. In December, I have got 2 very important shows that I am looking forward to. The first one, we'll be talking about the Gurbanis. We all know, as Kamalbirji has talking to me about, that there are many ragas in Gurbani that they sing the Shabbat into. So we would like to discuss more about that, how the ragas are performed in the Shabbat. वो लोग कहते हैं कि शब्द पढ़ते हैं, शब्द गाते नहीं हैं. But we want to talk about that. One of the sessions in December, and then another session I'll be blessed, and I'm really looking forward to have Pandit Anindya Chattopadhyay joining us from Kolkata with his son. So that would be another interactive session about tabla. And let's see how the new year brings to us. I'm very hopeful that we'll have many more concerts in and around London. We'll do more songs, more compositions, and more work. Yeah. Can I just mention about one particular concert very quickly? That's coming up on the 12th of December. Chiranjeeb, that is for the first time after COVID. We're going live on the stage from another organization, Anandadhara Arts in Poplar Union. We're doing a festival of hope. Let There Be Light, and Chandraji would be performing there, and there are a few other artists and dance program.
and that will be live on the stage with limited number of audiences, and obviously live through Facebook. So keep watching. This is we are very excited about that sort of coming program. But as you say, we want to create the Mahal. We are not going to be defeated by COVID. We are coming. We are actually sort of doing whatever we could do, and hope that you'll be with us in all our endeavors. Thank you. Thank you. Thank সবাই you. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, Namaskar. খুব শীঘ্রই আবার দেখা হচ্ছে। এখানে বন্ধ করো।